Electrostatics. Here we study the charge and electron at rest. Mainly we are discussing because it is a mobile carrier. Although we will discuss proton also. So charge rest, it produces electrical field only. Where charge moving, it is producing electrical field and magnetic field both. When charge is accelerating here, oscillating charge, vibrating charge or accelerating charge produces electrical field, magnetic field as well as electromagnetic waves. Here charge is the basic property. They can repel or attract. There are two types of charge, positive and negative. Positive charge means loss of electron. Negative charge means gain of electron or extra electron. Here we know similar charges, they repel, and opposite charges they attract there. Hello. This is the repulsion, which is the sure test of electrification. Charged body can attract a neutral body also. Like suppose this is the charged body A and B is neutral, but electrons are attracted to positive charge A and positive charge of B is repelled. So they are separated. Now between this positive charge of A and negative charge of B, they are at a closer distance, so attraction force is more in comparison to positive charge of A and positive charge of B. They are separated at a distance of R2 here, is more, so repulsive less. It means overall attraction force is more than the overall repulsive force. It means body A can attract even neutral body. So we are not very sure whether this body B is having a charge or it is a neutral body. So attraction is not a sure test, but repulsion is a sure test of repulsion. There is no doubt in the repulsion. Now repulsion is 100% sure test. Unit of charge is Coulomb. It is very big unit. So smaller units are 1 millicoulomb, 10 to the minus 3 coulomb, 1 microcoulomb, 10 to the minus 6 coulomb, 1 nanocoulomb, 10 to the minus 9 coulomb, and 1 picocoulomb is 10 to the minus 12 coulomb. Biggest unit is say 1 Faraday, that is 96500 coulomb. There are some other units also, like 1 coulomb is related as 1 by 10 half coulomb or 1 by 10 of mu of charge. Mu means electromagnetic unit, and here ESU 3 10 to the 9 ESU electrostatic unit, that is also called stat coulomb. There are some properties here. Number 1, charge Q does not depend on speed. As mass depends on speed given by this relation we know, but there is no such relation for charge and the speed. So charge does not depend on speed, mass depends. Second, additive nature is the algebraic sum of the charges will be there. Means with sign we have to add. It is not the arithmetical sum. For example, if we are having 20 protons plus say 19 electrons, electrons are positive, electrons are negative. So with the sign if we add, we are getting positive 1 electron charge. It is not 39. If it's 39, it's arithmetic. So only algebraic sum of charge is there. Is the additive nature. Now third point, this third property here is conservation of charge. Charge can neither be created nor destroyed. It can be transferred from one body, positive charge, loss of electron, to the other body, negative charge, gain or extra electron. For example, if it is neutral atom, we are taking the one electron, residue will be positive charge, means loss of electrons, so positive ion. For a neutral body, we are supplying here 3 electrons, it will become negatively charged. So positive charge means loss of electron, negative charge means gain of it. Here in both the cases, charge is conserved in totality, plus minus 0. Here 0 plus minus 3, so minus means charge is conserved. Another example of say uranium converting into helium particle, alpha particle here, helium nucleus, alpha particle plus thorium. If we add here 92, 90 plus 2 is 92. Charge is conserved in say gamma ray photons. 2 gamma ray photons can be converted into say electron and positron. Positron is a very special particle. It is also called positron. Mass like say electron, charge like proton, positive charge. So that's why it's called positive electron, positron. Here also this is the reversible process. Gamma ray photon neutral converted into electron and positron. Overall this is also neutral, plus and minus. So it can be converted into gamma ray photon. This is the reversible. In all the cases charge is conserved. Now
The fourth property, quantization of charge. Quantization means charge can be transferred from one body to the other body in the integral multiple of fundamental charge. Fundamental charge is electron. So Q can be written as plus minus Ne. N must be integer. Plus means loss of charge. Negative means extra electron. So loss of electron positive, extra electron. N must be integer and cannot be in fraction. Say one question here of NCERT. How many number of electrons are associated with 1 coulomb of charge? With this formula, Q is equal to Ne, N is equal to Q by E. Q means 1 coulomb. Electron ka charge 1.6 10 power. If we solve it here, we are getting 6.25 10 power 18 electrons are associated with 1 coulomb. That is very large number. So 1 coulomb is very big. Fractional charge particular, possible here say quarks, but they are lying, they are exiting, they are residing inside the nucleus only. Outside the nucleus, there is no existence of quarks. There are 6 types of quarks in the nucleus, but mainly there are 2 types of quarks. Up quark Q equal to plus 2 by 3e and down quark E minus 1 by 3. This is positive quark, this is negative. One theory here where protons or neutrons are nothing but the different combination of quarks. So it is combined like charge. This is proton converting into neutron and neutron can be converting into proton. Configuration changes, become proton and it will become proton. This is the NCERT question here. Proton having positive plus 1 charge is the combination of 2 up quarks and 1 down quark. Up quark means positive 2 by 3e plus by 3 minus down quark minus 1 by 3. Solve it here, we are getting positive charge on proton. And neutron having no charge. This is the combination here is 1 up and 2 down quarks. So it will become 0 means there is no charge on the neutron. This combination changes proton converting neutron and neutron converting proton. Now question is how to charge the body. Here are also this is methods of charging. There are 3 methods basically friction by rubbing action, by conduction and by induction. So first we are discussing here by friction, rubbing action. That is called frictional electricity. By friction or rubbing action between the two bodies, charge is transferred from one body, loss of electron, and to the other body, gain of electron. So that is the negative charge. Gain of electron means negative charge, loss of electron means positive charge. So electrons are transferred from one to their body. For example, if we are having say glass rod and silk cloth, glass rod is losing electrons, so it is having say positive charge. Silk cloth is gaining electrons, so it is having say negative charge. Another example of dry hair and plastic comb. Dry hair is positive charge, plastic comb having. It is the question from which body to which body electrons are transferred. Electrons are transferred from less work function body to the more work function body. Less work function means here defining work function, the minimum energy required to emit the electron, to liberate the electron from the material surface. So जिसका work function कम होगा easily electron loss करेगा, जिसका ज़्यादा होगा gain कर लेगा. Here we are considering this series. Very important series here, like say human hand, glass, and hair, nylon, cat fur, cotton, steel, amber, ebonite, plastic, and Teflon. In this series, when we move from left to right in any combination, lesser work function, left body, and the right body is higher work function. So for any pair of this series, the two material we have taken, say for any pair, first member from left to the second member to the right. Here left member is having less work function, first member, and second member is having more work function. जल्दी से कौन सा लॉस करेगा, जिससे कम एनर्जी चाहिए. तो लेफ्ट वाले में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप, एंड इन राइट में मोर वर्क फंक्शन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, so it will become negative charge developed. In this series, any combination, suppose we are taking say glass and say amber, glass positive हो जाएगा, amber negative हो जाएगा. Suppose nylon and the ebonite, nylon positive, ebonite negative. लेफ्ट में वर्क फंक्शन कम है, राइट में ज्यादा. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ऑलवेज फ्रॉम लेस वर्क फंक्शन टू
more work. Now here say there are other methods of charging the bodies by conduction, by induction. So there is a difference between conduction and induction. In conduction, body A having positive charge, body B is having no charge. If we touch the insulating handle, charge will not go to the earth. So always hold the charged body by the handle, insulating handle. If we touch body A and B, by touching, electrons are attracted by the positive charge and positive charge is repelled. As there is a physical contact, electron can transfer from B to A and positive charge means loss of electron. ये negative इसको fill कर देंगे. यहाँ पे positive charge neutral हो गए by the electrons. So positive charge means loss of electron कम हो गया, तो positive charge in other words कम हो गया. But यहाँ पर negative निकल गया तो positive बचा. So by conduction we are having the similar nature of charge developed on B body as of A. In induction there is no physical contact. Body is having positive charge, body B having no charge. But electron is attracted towards A and positive charge is moving away from A. If we the other side is temporarily earth means किसी वायर से या फिंगर से हमने टच किया फिर इसको हमने हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर, यानी पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो. यहाँ पे बी बॉडी पे कौन सा नेचर का चार्ज आएगा? जस्ट अपोजिट ऑफ ए. और पॉजिटिव ए है, नेगेटिव हो गया. अगर ए नेगेटिव होगा तो बी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. हियर देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट इन कंडक्शन. यस देयर इज in induction there is no physical contact. Nature of charge developed same nature, positive positive, negative negative. Here opposite nature, positive तो negative भी पर develop होगा and vice versa. Here sharing हो रही है, yes sharing है. In conduction there is sharing. Induction there is no sharing. लिमिट ऑफ चार्ज ना है उसी में शेयरिंग हो सकती है. पर अपना ए से किसी कोई चार्ज लॉस नहीं हो रहा, सो देयर इज नो लिमिट, अनलिमिटेड अभी चार्ज डेवलप करते हैं. बी का ही चार्ज डेवलप करना है, ए को कोई शेयरिंग नहीं हो, ऐसे कोई भी चार्ज ट्रांसफर. सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन से कंडक्शन एंड इंडक्शन. हियर लेट अस डिस्कस दिस केस. प्लास्टिक कम by rubbing action having say negative charge, it is attracting the small piece of paper. Paper is neutral, but here positive charge of the paper is attracted towards the plastic comb and negative charge is repelled. See the difference here, negative and positive, the distance between the negative charge of plastic comb and positive charge of this paper closure. Similarly, negative is at a comparatively larger distance. Here R1 is less than R2 and force is reciprocal of the inversely proportional to the square of the distance. तो अगर R1 कम है तो force ज्यादा होगा, R2 ज्यादा है तो कम होगा. So attraction force is more than the repulsive. That is why the charged body can attract even neutral body like this. Attraction is more than. Now we know similar nature of charges repel, positive or negative. But here as a very special case here, positive charge and positive charge, but one charge is very big, in second positive charge is smaller. By the induction, negative charge of B attracted towards the positive charge of A and negative charge of A attracted towards the positive charge of B. So there is no single force between positive, but there are many combinations here between the positive of A, negative of B, positive of A, positive of B, negative of A, negative of B, positive of A, positive of B. So this way, as A and B having both the positive charge, but due to the induction, attraction force is more than the overall repulsive force. So positive charge attracts positive charge. Very special. In induction, we know charge developed on second body Q dash is equal to given by the formula Q bracket 1 minus 1 by K. Is the charge on first body, Q dash developed on the second body, where K is the dielectric constant of the medium. And dielectric constant for some material given as say K is equal to 1 for vacuum, 1.006 for air, 3.8 to 14.5 for glass, and for paper 3.6 here. For PVC, K value is 4. For ceramics, there is a large variation, 10 to 10,000 variation, 10 to 10,000 the value. And here 4.5 to 5.5 for bakelite, 2.1 for Teflon, 80, sometime 80, sometime 81 for water. In some books 80, some other books 1. And K is 16.5 for diamond, 1200 for barium titrate, and 3 to 8 for mica,
and infinite for metal or earth. Now Coulomb force. Coulomb force in the charges that is valid only for the point charge. Coulomb's law, this formula K Q1 Q2 upon R square valid only for the point charge. It's very important here. Charges must be point charge. If the charges are bigger in size, then induction process will be there. Effective force may change. But for point charge, Coulomb's law valid. Coulomb force is directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance. Combine them, putting the proportionality constant. A, it is 1 upon 4 pi epsilon naught. So this is the formula for Coulomb force. 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 R square. Here the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10.9. There is epsilon naught permittivity of the vacuum. The numerical value here is 8.85 and 10 to the minus 12. The dimension of epsilon naught permittivity of vacuum is given by m per minus 1, l per minus 4 and a to 2. If the dielectric medium is inserted in between the charges, force in medium between the same charges at the same distance is given by 1 upon 4 pi epsilon. Epsilon is the permittivity of the dielectric medium, and epsilon r is the relative permittivity of the medium. It is given as the ratio of epsilon upon epsilon naught permittivity of the medium upon permittivity of the vacuum. Sometimes it is called K, dielectric content of the medium. If we say this is the relative permittivity of the medium, or we say dielectric content of the medium, both are same thing. After cross multiplication, epsilon is equal to epsilon naught, epsilon r. Epsilon is epsilon naught, epsilon r. And here epsilon is equal to epsilon naught की जगह k भी लिख सकते हैं. K is the dielectric constant of the medium. Suppose you put it here in equation 2. This value epsilon is equal to epsilon naught k. Put in equation 2, we get Fm means force in medium 1 upon 4 pi epsilon की जगह epsilon naught k. So this is the equation of force medium and this is the equation of force in vacuum. If we divide equation 4 by equation 1, we get सब कट जाएगा 1 upon k बचेगा. तो मतलब equation 5 से Fm is less than F naught by factor of 1 by k, or Fm upon F naught is 1 by k and F naught upon Fm will be. So we can say the force in the medium is reduced by a factor of, मतलब ज्यादा force कहाँ होगा? In vacuum. Suppose here water k की value 81 means suppose we have taken the salt in air. If the force in vacuum and force in water, the attraction force between the sodium and chloride ions, it is reduces by a factor of k. So more and more ions are there because of the weaker forces, and reaction rate will in water in comparison to when there is no water में force weak हो गया, आयनाइजेशन ज्यादा होगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन वाटर में करेंगे तो रिएक्शन रेट is faster reaction, as we have seen in lab. Now vector form of force. Here if we take a positive charge and positive charge, both are positive Q1 Q2, repulsive force will be there. On force on charge say Q2 due to Q1, the force repulsive on 2 due to 1, force on 2 due to 1, and F12 is force on 1 due to, they are in opposite direction, they are equal also. They are equal, numerical value is same and direction is just opposite. Sequence here of the suffix is opposite F12. Suppose we write the force on 2 due to 1, it's 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2. R square is the magnitude and unit vector R12. F21 की डायरेक्शन क्या है? 1 से 2, मतलब फोर्स ऑन 2 टू 1 डायरेक्शन हो जाएगी इसकी बाय यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to. So this is the force in vector form given by equation 1 in terms of unit vector. We know the unit vector is vector upon its magnitude. So 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, यहाँ क्यूब हो जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा. पहले यूनिट वेक्टर था टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. R12 is R2 minus R1. यह मॉडुलस है तो इसका मॉड ले लिया टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऐसे निकल बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Suppose Q1 Q2 the product is more than 0, it means both the charges are similar, positive or negative. Q1 Q2 is more than 0, it means repulsive force is there. Suppose we are taking Q1 Q2 less than 0, means there is attraction force. This is the positive charge, this is the negative charge. F21 2 1 की तरफ हो जाएगा, 2
टू अट्रैक्ट 1 2 की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑफ सन। तो F21 इज व्हाट 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 1r स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया, बट R21 F21 2 से 1 की तरह, मतलब ये सफिक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम सफिक्स। पल्सन फोर्सेस आर इन सफिक्स विल बी इन अपोजिट सफिक्स 1 2, अट्रैक्शन होगा 2 1 2 1 2 1 2, सेम ऑर्डर सेम सिग्नल। नाउ वी कंसीडर हियर इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। there are cases say line charge distribution, linear charge distribution, area wise distribution, volume wise distribution. First we are taking linear charge lambda. Linear charge density lambda equal to Q upon L. So Q can be written as lambda into L. Suppose यहाँ पे चार्ज है स्मॉल लेंथ में dl में, dq is equal to lambda dl। यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, फोर्स स्मॉल फोर्स इज गिवन बाई 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2, Q1 इन Q नॉट एंड Q upon R स्क्वायर R कैप। हम इंटीग्रेट कर लेंगे एंड dq को रिप्लेस करेंगे लैम्डा dl से इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस dq को हम सिग्मा इंटू ds से रिप्लेस करेंगे। सिग्मा हियर दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी dq अपॉन एरिया। तो हम टाइम इट इज कॉल्ड एस आल्सो सरफेस एरिया। dq को हमने सिग्मा ds से रिप्लेस करेंगे तो ये सरफेस कर लेंगे सरफेस वाला, तो मिल जाएगा 4। सिमिलरली अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इन दिस स्मॉल वॉल्यूम टू इज गिवन एज रो इनटू dv। रो इज वॉल्यूम चार्ज, इट इज गिवन बाय चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सो dq विल बी रो इनटू dv। रिप्लेस कर देंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज। तो दियर द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्टेंस लेंथ वाइज लिनियर एरिया वाइज सरफेस एरिया एंड हियर इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा लिनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा हियर इज surface charge density and rho is volume. Now very important here, superposition say let us consider Q1 charge, Q2 Q3 Q4 charges are there, like Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे बहुत से charges हैं। What is the superposition principle? That charge distribution as follows. As per the superposition principle, the total force on any one charge, here हमने Q1 ले लिया, तो total force on Q1 due to all the charges nearby charges are at rest. If we see the vector sum of all the forces on charge Q1 due to other charges taken one by one, if we are writing in vector form, this is called superposition, because the force, total force on 1, that is force on 1 due to 2, force on 1 due to 3, force on 1 due to 4, on 1 due to 5, 6 and so on. If we are writing in vector summation, vector sum, it is called mathematically the superposition. Now here electrical field, suppose this is the positive charge here and force is away from this on positive charge repulsion, negative होगा तो ये नॉट पर फोर्स इधर की तरफ का ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से पॉजिटिव पे फोर्स अट्रैक्शन हो गया प्लस क्यू की वजह से फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सचेंज्ड बाय एट ए पॉइंट बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द फोर्स experienced by unit positive charge at a distance of, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज Q नॉट, फोर्स की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q नॉट कैंसिल होके ये हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्मूला मिल गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन R स्क्वायर, चार्ज है R डिस्ट, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला हो गया गिवन बाय दिस। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यही फोर्स लगेगा बट ये रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन एज KQ/R स्क्वायर। वेक्टर में लिखते हैं तो R कैप आ जाएगा। Q नॉट शुड बी वेरी स्मॉल, अगर Q नॉट बड़ा होगा तो ये Q की फील्ड को डरेगा। तो 1 कूलम इज वेरी बिग, डिफाइन करते हैं बाय फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड द फोर्स बाय यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव डिस्टेंस बड़ा है कि डिस्टर्ब कर देगा, तो मैथमेटिकली इट शुड बी वेरी स्मॉल। पॉसिबल चार्ज स्मॉल का क्या हो सकता है, पॉसिबल इज ओनली पॉजिटिव एंड मिनिमम 1.6 into -9। तो दिस द मैथमेटिकली लॉजिक हियर है। यहाँ पे अगर 1 कूलम ले, 1 कूलम वेरी वेरी बिग, इट विल डेफिनेटली डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस। Q नॉट शुड बी वेरी वेरी टेंडेंट टू 0, बट 0 होता नहीं है। पॉसिबल चार्ज है प्रोटॉन पर मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल। नाउ दे आर इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फ्लक्स। अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को यहाँ रखें तो रिपेल होगा, इधर रखें तो इधर रिपेल होगा। तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस वेयर इफ वी पुट द टेस्ट चार्ज इट विल tend to move
away from positive and similarly for towards negative. So these are the lines of force going away from positive charge and coming towards the negative charge. Suppose दोनों positive होंगे तो दोनों से away होंगी. Equal amount center point, that is the neutral point where there is no electrical field है तो cancel होगा. एक बड़ा एक छोटा है तो neutral point किधर मिलेगा? छोटे वाले की तरफ. But on the line joining these two charges in between. Suppose एक positive है एक negative है तो ये फिर away हो जाएगा. Positive negative से neutral point क्या मिलेगा? Away, or you can say towards smaller, but ये line joining in between नहीं, बाहर मिलेगा neutral. If suppose both are positive one negative, no neutral point axial point होगा ही नहीं. Now electrical lines of force, they never intersect each other. बोर्ड में क्या है कई बार. Suppose there are two lines of force, say 1 and 2. If we draw the tangent, it will give you the direction of electrical field at this point by that. So on 1 and 2, drawing the tangent, these are two possible directions of electrical field. 1 and E at the same point. If we put the test charge here, because of this E1, it tend to move in this direction. Because of E2, it will tend to move in this direction. So there are two directions possible of force at a single point. They will tend to move both directions. It is never possible. Test charge एक बार में एक ही direction. It means not possible. A test charge at the same time they move into different direction. Never possible. Means here lines of force also never interact करेगा. ये possibility जाएगी जो possible ही नहीं. Means lines of force they never enter. Now we are defining, say here, electrical dipole. Electrical dipole is the arrangement of equal and opposite charges they kept at a smaller gap. The definition of dipole: arrangement, negative charge, positive charge, a smaller gap to a distance. Ideal dipole is Q is very large and distance is or gap is very small. This is the ideal case, ideal dipole. Dipole moment is defined as the product of charge multiplied by the separation distance. But dipole moment is a vector quantity, so Q into 2a, तो 2a की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू ए चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम इनटू. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन. समटाइम इट इज कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन. एंड की तरफ एक्सियल पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन. To find out the electrical field due to the dipole at axial, there are two charges, negative, positive, at a separation distance 2a from the center at a point C at a distance of r. क्या निकलना? इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट C, एक गैप हो गया r, यानी सेंटर से r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे हमको एट एक्सियल पोजीशन. तो हियर P C डिस्टेंस विल बी r में से माइनस हो गया, r माइनस से, and AP will be R plus A. तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा हो गया. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, बट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस E1 इज मोर देन, द नेट फील्ड विल बी E1 माइनस E2. E1 E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू Q बाई R स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे. Q कॉमन 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई कर लेंगे. एलसीएम आ गया R स्क्वायर माइनस A होल स्क्वायर. इधर पुट कर देंगे, ओपन किया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2R माइनस आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2r. ये कैंसिल हो गया. 2r 4r हमने ऐसे लिख दिया. 2 into 2a and 2r, it will be 4r. 2 into 2a की जगह क्या लिखेंगे? P, डाइपोल मोमेंट P लिख दिया. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला मिल गया हमको Q1 by equation 1 at axial position. Suppose R is very large than A square can be neglected. नेग्लेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला मिल गया, एक R कैंसिल. So sometime this is called short dipole. Short dipole means very small length or gap in comparison to R, called short dipole. Short dipole का फॉर्मूला हो जाएगा K2P R cube, and dipole का फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल फील्ड K2P R upon R square minus A. dipole. डायरेक्शन ऑफ P एंड डायरेक्शन ऑफ E आर सेम. यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, P की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? E1 माइनस E2, यानी P and E are in same direction. Now to find out the electrical field due to the dipole at equatorial position, it is called equatorial position is equal. Sometimes it is called perpendicular bisector position. Sometimes it is called broad side on position. broad side की पोजीशन को नॉर्मली बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या ब्रॉड साइड ऑन. तो इक्वेटोरियल पोजीशन निकाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल. इससे AB माइनस Q प्लस Q एट ए सेपरेशन डिस्टेंस 2a सेंटर से OC की डिस्टेंस R है. तो BC एंड AC विल बी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये डिस्टेंस
कैसे जाएगी, रूट आर स्क्वायर। पॉजिटिव से अवे हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड, सो E1 इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ BC एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, सो दिस डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू BC अगर रिजॉल्व करते हैं, सपोज दिस इज थीटा हियर, दिस इज आल्सो थीटा हियर, दिस थीटा, दिस थीटा विल बी होता corresponding and this theta alternate. तो E1 को E2 को रिजॉल्व किया हमने, आफ्टर रिजोल्यूशन वी आर गेटिंग E1 sin theta, here E1 cos theta, तो क्या तो E2 cos theta, E1 sin theta, because E1 sin theta and E2 sin theta they are equal, so they will cancel out. इसको दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों एक सेम डायरेक्शन है, तो नेट फील्ड विल बी E1 cos theta प्लस E2 cos theta। E1 E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होने से हमने इसको 2E1 cos theta, 2E1 की न्यूमेरिकल वैल्यू ये है गिवन बाय इक्वेशन 1, KQ upon R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, cos theta हो जाएगा बेस अपॉन A अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड रूट A R स्क्वायर प्लस, ये पुट कर दिया हमने cos theta की वैल्यू, तो जाएगा K 2Q, Q इंटू 2A की जगह P R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1 प्लस हाफ 3/2, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा हमको इक्वेशन 2, KP अपॉन R स्क्वायर पावर डिवाइड। Suppose R is much more than A square can be neglected, again it is called solid dipole, so हमने इसे नेग्लेक्ट किया, R स्क्वायर कैंसिल रूट से R क्यूब, दिस इज फॉर solid dipole। अगर रेशियो निकालते हैं ये एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल पोजीशन, इट विल बी 2/1 फॉर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, टू डिफरेंट रेशियो विल बी। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशन, लेट दिस it is neither axial nor any other position. Say P is the electrical dipole moment. If we resolve here, it will P cos theta, P sin theta में मॉडुलस हो जाएगा P। अब P के लिए C पॉइंट एक्सियल नहीं है, बट P cos theta के लिए एक्सियल है E1, so E1 is the axial electrical field for imaginary dipole moment P cos theta. This is E1 axial, E2 equatorial, axial equatorial वाला फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम लोग। ये इक्वेटोरियल का हो गया KP अपॉन R क्यूब, एक्सियल का हो जाएगा KP अपॉन 2P अपॉन R क्यूब, ये यूज कर रहे हैं। तो E1 will be K2P, P की जगह P cos theta लिख रहे हैं, यहाँ पे KP अपॉन R क्यूब जगह P sin theta, तो E1 E2 axial and equatorial position at point C. Net field will be using Pythagoras theorem, E1 square plus ET square, and E1 की न्यूमेरिकल वैल्यू ET की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो हियर कॉमन ले लेंगे KP अपॉन R क्यूब आ जाएगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर, 4 को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो द ई नेट न्यूमेरिकल वैल्यू इज KP अपॉन R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय इक्वेशन। तो इसके एंगल निकालना मेरे को अल्फा, हियर ट्रिग्नोमेट्री tan अल्फा विल बी 2/E1, 2/E1 की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, गिवन बाय दिस E1 एंड E2, यहाँ पर KP अपॉन R क्यूब कैंसिल होके sin थीटा अपॉन 2 cos sin upon cos tan, so this is 1/2 tan, alpha हो जाएगा tan inverse 1/2, so this is the magnitude at any position and this is the direction of electrical field at point C. Now suppose in the external field, electrical field, we put the dipole here like this, making an angle initially theta with P and E के बीच के एंगल क्या है, so force on the dipole will be QE in the directional electrical field and QE in the opposite direction of electrical field at minus, पॉजिटिव में से फोर्स लगेगा in the directional electrical field, नेगेटिव में opposite, but QE both are equal and opposite, so net force will be 0 here, and यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे ABC, sin theta will be perpendicular BC upon AB, AB is what, a gap 2A, so BC perpendicular distance is 2A sin theta, net force 0 होगा, but net torque force equal and opposite force acting, these two forces acting at separation distance something, so it is called a couple torque. What is a torque? Torque is the force multiplied by the perpendicular distance, here BC. Force is QE, perpendicular distance is 2A sin theta, Q into 2A की जगह P लिख देंगे, so the torque will be PE sin theta। अगर हम फैक्टर में लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा P क्रॉस E, tan थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू से 180 डिग्री, sin 0 sin 180,
0 minimum. Tan theta is 90, tan theta is maximum, sin 91. So it is the maximum torque P when theta is 90, minimum for 0 when theta is 0, or in both the cases torque is. The directional torque by cross product can be found by right hand rule. Here, what is the tendency of the torque? Just to rotate the dipole and ultimately align the dipole in the direction of electrical field external is the function of tendency. Hello, or potential energy or energy stored in the system. What is the system here? Work done dipole in external field. When the dipole is placed in external uniform electrical field, some work done by the torque just to rotate the dipole, and ultimately it aligns in the direction of electric field. Now suppose is the initial angle theta 1 and final angle theta 2 between P and E. If we are rotating very small angle, so small work done required here to rotate the dipole by small angle theta. Work done is given as torque into what is the torque? We know formula है P sin theta. अगर हम टोटल निकालें इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा 1 to 2, so work done will be PE sin theta d theta from initial angle theta 1 to final angle sin theta का integration minus cos theta. So upper limit minus lower limit. This is the formula of work done. Minus PE in bracket cos theta 2 minus cos theta 1. This work done is stored as the potential energy. So this is the potential energy stored here is minus PE bracket cos theta 2 minus cos theta 1. This is the final formula given by equation. Now we know the special case when theta is equal to 0 degree. Theta 0 means P and E both are in same direction. On positive charge QE force in the direction of electrical field and negative in the opposite direction. So QE and QE both are equal opposite, net force is 0. And theta 0, so P sin theta sin 0 0, so torque is also 0. Force 0 means there is no linear motion. Torque 0 means there is no rotatory motion. कोई motion नहीं हो रहा, so it is called equilibrium. But suppose इसको हमने डिस्टर्ब करें either clockwise or anti-clockwise, torque develops here which again align in the same direction. So this is called stable equilibrium. डिस्टर्ब करने के बाद फिर से अपनी पोजीशन एक्वायर कर रहा है. So this called stable equilibrium. Suppose theta 180, P and E both are in opposite direction. नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट में, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिकल फील्ड अगेन QE माइनस QE बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स इज आल्सो 0. एंगल P एंड के बीच में 180, सो cos 180 की वजह से भी टॉर्क नो लीनियर मोशन बिकॉज फोर्स 0, नो रोटेटरी मोशन बिकॉज टॉर्क 0. अगेन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. बट इफ वी डिस्टर्ब a little bit, torque will develop, it will align into a new position that is theta 0 in the direction of electrical field. So this equilibrium डिस्टर्ब करने से पूरा डिस्टर्ब हो रहा है. So this equilibrium is called unstable. थीटा 0 is called stable. ये डिस्टर्ब होने से वापस अपनी पोजीशन एक्वायर कर रहा है, पोजीशन चेंज हो गई. From unstable to stable में पूछा गया. Say even by small distance. So theta 0 stable equilibrium, theta 180 is unstable equilibrium. Special case here when theta 1 0 degree, theta 2 180 इस फॉर्मूले से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे माइनस पी इन ब्रैकेट cos theta 2 माइनस cos theta 1, theta 2 180, theta 1 0. यानी ये आपका माइनस माइनस से आ गया हमारा वर्क मिनिमम मैक्सिमम टेंसिल एनर्जी. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. पॉजिटिव वर्डन का मतलब होता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. थीटा 180, थीटा 2 0, सॉल्व करके आ रहा है माइनस 2. नेगेटिव वर्डन का मतलब हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम. बोथ आर मैक्सिमम. पॉजिटिव मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव मींस वर्क डन बाय द सिस्टम. थीटा 1 90 है, थीटा 2 थीटा. फिर से फॉर्मूले से u इज इक्वल टू माइनस cos थीटा 2 थीटा 2 मीन थीटा माइनस cos थीटा 1 मीन 90. cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इट विल बिकम माइनस p cos थीटा. इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया. u इज इक्वल टू माइनस p cos थीटा इक्वल टू माइनस p डॉट के